Now children, today let's start with chapter number 2, that is inside our earth. So let's study about the interior of the earth. So earth is the only planet in the solar system that support life. ये dynamic planet है. यहाँ पे land आपको lithosphere, आपको water, hydrosphere, air, atmosphere देखने को मिलेगा. We cannot study the inner part of the earth directly due to very high temperature. Excavation and exploration of interior of the earth also do not provide much information. So on the basis of information provided by volcanic eruptions, seismic waves and other sources, it has been found. Three main layers of the earth is crust, mantle, core. Right, crust thin solid layer है जो outside cover करती है, uppermost layer है आपकी. Right, it makes sea floor of 4 to 7 kilometer thick and continents average 35 meter thick. Rocks and soil form the uppermost layer of the crust. क्या form करते हैं? uppermost layer. मेंटल की बात करें, above the core and below the crust lies the mantle जो 2900 किलोमीटर thick है. Mantle has dense rigid rocks. The chief constituents are silicates of iron and magnesium. Mantle has two parts, upper part जिसे मेथोस्फीयर कहते हैं, lower mantle mesosphere. ठीक है, ये क्या है? 100 to 200 मीटर डीप है. लोअर मेंटल कैसा होता है? सॉलिड फॉर्म का होता है. एंड द एवरेज डेंसिटी ऑफ मेंटल इज 5.5 पर क्यूबिक सेंटीमीटर. अगर वहीं हम कोर की बात करें, सो कोर इट इज द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ. इट हैज रेडियस ऑफ 3470 किलोमीटर. इट इज मेनली मेड अप ऑफ निकल एंड आयरन जिसे हम निफे कहते हैं. इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, आउटर कोर एंड इनर कोर. द अपर कोर इज इन लिक्विड स्टेट एंड सेड टू बी इन मोशन and the motion is generated by heat difference. So we can say because of enormous pressure overlying layer in the inner core, it is highly compressed and is therefore in solid state. The temperature of this layer remains between 22 degrees Celsius to 5000 degrees Celsius. Right? So we can say usefulness of different layer. We live on earth crust. We can imagine our homeland. यहाँ पे आपको various continents, oceans देखने को मिलते हैं, island. ये सिस्मिक वेव्स प्रोवाइड करते हैं जो आपको स्टडी ऑफ अर्थ में हेल्प करते हैं. अर्थ इंटीरियर इज आल्सो कंसीडर्ड एज मैग्मा जनरेटिव. इट प्रोवाइड्स ह्यूज वैरायटी ऑफ रॉक्स लाइक इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक. द अर्थ इंटीरियर इज रिच इन वैरायटी ऑफ मिनरल. नाउ मटेरियल्स ऑफ द क्रस्ट, रॉक्स एंड मिनरल. ये किसके बने हैं? रॉक्स ऑफ मिनरल. एंड मास ऑफ द हार्डर पोर्शन को हम क्या कहते हैं? अर्थ क्रस्ट, जिसे हम रॉक कहते हैं. इट इज कंसिस्ट ऑफ सेवरल मिनरल्स. व्हाइल मिनरल्स आर मेड अप ऑफ सम बेसिक सब्सटेंस जिसे हम क्या कहते हैं? एलिमेंट्स. रॉक्स, एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक्स अप अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड रॉक. Rocks and minerals, and the rocks are the solid particles that are made up of mixture of minerals. A rock has no definite chemical composition but conglomeration of various minerals. इनको हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड करा है on the basis of color, size, texture, composition, hardness and softness. So variation are the results of their what? Formation. So we have classified into igneous rock, metamorphic rock and sedimentary rock. Igneous means Latin word, fire से हुआ. It is associated with volcanic eruption. Right? Hot molten material called magma वो erupt होता है. And they are formed when the magma cools down and solidifies. Rock were first to be formed and then known as primary rock. And we have divided igneous rocks into two types, intrusive and extrusive. Intrusive क्या होती है? जब ठंडा हो जाता है, cool down deep inside the crust, और वो कहाँ से? आपके इंट्रूसिव से ऑरिजिनेट होता है. इसको हम प्लूटोनिक भी कहते हैं. ग्रेनाइट एक इंट्रूसिव इग्नियस रॉक है. ग्राइंडिंग स्टोन्स एंड दिस स्टोन्स आर यूज्ड टू प्रिपेयर पेस्ट और पाउडर. देन वी हैव एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक, वोल्केनिक. व्हेन मोल्टन लावा कम्स टू द अर्थ सरफेस, इट कूल्स डाउन एंड व्हाट इट बिकम्स सॉलिड टू फॉर्म अ रॉक. राइट? दे आर कॉल्ड वोल्केनिक रॉक. दे हैव वेरी फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर. ठीक है, ये एक्सक्लूसिव है. डेक्कन प्लेट्यू ऑफ इंडिया इसका बना हुआ है. एंड ब्लैक सॉइल विच इज बेस्ट फॉर कॉटन कल्टीवेशन. सेडिमेंट्री रॉक की हम बात करते हैं. दीज रॉक्स आर फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स ऑन द फ्लोर ऑफ ओशंस, रिवर. दे आर कैरिड बाय विंड, वाटर और मूविंग आइस. सेडिमेंट्स डिपॉजिटेड लेयर अपॉन लेयर वो हार्डन हो जाती है. एंड मोस्ट ऑफ दीज रॉक कंटेन फॉसिल्स विच आर हार्डन रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. राइट? मिनरल ऑयल इज फॉर्म्ड from the remains of animals or plants buried when river deposit their load or mud. Sedimentary rocks में आपके metals होते हैं. ये आपको gold के और यहाँ पे आपको tin के deposit भी मिलते हैं. Then we talk about metamorphic rock.
Metamorphic rock, they are formed through the process of metamorphism and means alteration or transformation. When the rocks are subjected to high temperature pressure, the original minerals होते हैं rock में जो हमें मिलते हैं वो alter हो जाते हैं and the joints in the rocks are pressed and crystallized. Metamorphic rock may have layers which are highly compressed and we have fossils that are not found in these rocks. And जो metamorphic rock होते हैं वो impermeable होते हैं, impermeable. Usefulness of rocks, they are useful for the mankind, they are used for making buildings, roads, bridges. इनकम गेम्स में यूज करते हैं. पोटास और फॉस्फेट्स, दे आर यूज्ड एज सोर्स ऑफ केमिकल. नाउ रॉक साइकिल, रॉक्स आर फॉर्म्ड थ्रू अ रॉक साइकिल. एज वाटर चेंजेस इन द फॉर्म इन नेचर थ्रू वाटर साइकिल, रॉक्स चेंज देयर फॉर्म थ्रू व्हाट रॉक. इग्नियस रॉक को जब हम कूल करते हैं, सॉलिडिफाई करते हैं, ठीक है, इग्नियस रॉक अंडरगोन वेदरिंग एंड इरोजन. So igneous and sedimentary rocks undergo metamorphic which deep inside the earth, जिसमें क्या होता है, molten form से वो high temperature की वजह से दोबारा किस में चेंज हो जाता है, मैग्मा में चेंज हो जाता है. नेक्स्ट इज मिनरल. द इंडिविजुअल केमिकल सब्सटेंस व्हिच मेक्स अप रॉक्स आर कॉल्ड मिनरल. क्वार्ट्ज इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मिनरल जो आपको सरफेस ऑफ द अर्थ पे मिलता है. इट possesses what definite chemical composition. They are natural or occurring inorganic substance. They are made up of atoms of single element, and minerals, they are made up of single element include sulfur, gold, diamond and graphite. डायमंड्स का हम यूज ज्वेलरीज में, ग्रेफाइट में करते हैं, इन पेंसिल लीड्स. क्वार्ट्ज हो गया, हेमाटाइट हो गया एंड कैल्साइट हो गया, दे आर आल्सो यूज्ड. नाउ यूजफुलनेस ऑफ मिनरल्स, दे आर यूजफुल इन डेली लाइफ लाइक बिल्डिंग्स, हाउसेस. दे आर इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मैनकाइंड. दे आर यूज्ड इन प्रिपेयर ऑफ नंबर ऑफ थिंग्स, जैसे आपका कंप्यूटर हो गया, सनग्लासेस हो गए, cans हो गए, pencil हो गए. They also provide us precious stone. Coal, petroleum and natural gas are also used as fuel. They are also used in the field of medicines and fertilizers. They are like iron, aluminium, uranium and they are used in industries. कहाँ use करते हैं हम इसका? Industries में. Right? This is all in this chapter. Hope you understood. Now we will meet in the next class. That's all for today. Thank you.